Okay, so let's do a quick review. So how is this program working for you so far? Actually, I think last Wednesday I was in review session Mhm. and you explained all the things, and then Thursday, then there is a break. then there's a break. Okay. Yeah, but I have written the money goals. And regarding money, I am doing good. Mhm. Yeah, but yeah, I'm doing 90% or maybe 94%. So I have to cover remaining 6%. Okay, let me put it this way. See, one of the objectives of this program is to create 1 lakh rupees additionally out of your present sources of income, not from the present sources of income, but outside your present sources of income. By the end of this year, you have to create that six-figure money somehow. So, like, what is your progress on this? Or if there is at all any progress, or at all you have started on this? Mhm. No, actually, not new sources. Actually, Not from existing sources, but from a different stream altogether. yeah, actually, I'm working on my book. The book is also 90% ready, but not yet published. Mm, So maybe like I have to write the first 2, 3 pages or finalize the design and every connected with the decide the publisher. So that was yet to remain. हाथी mhm. निकल गया पूछ रह गई अभी. According to my knowledge, because I Okay, don't so let after me put it publishing. this way, that what other option you have to create an additional source of income Yeah. or Uh, additional source of money मान लो income की बात छोड़ो, additional sources of yeah. funds. Actually, currently I'm providing the income tax consultancy and GST consultancy. So I'm thinking of providing additional completely financial services like what insurance they required or looking advising them on their investment part. So that will give me additional source, but for that I think I'm that I decided 1 year back only that will be give me additional income, but for that purpose I have to increase my knowledge for what investment opportunities are there or what insurance opportunities are there and how they can invest in that, because only आप ये insurance ले लो term insurance ले लो it will not help them. सो आई हैव Mhm, टू चूज, हाँ इनसे आप मिल लो, इनसे इंश्योरेंस करवा लो या फिर इनसे mhm, इन्वेस्टमेंट करवा लो, mhm, और he will help you to open the demat account or choose the SIP. So that will be the additional source of income, and the other additional source of income will be uh, like I said, spreading financial awareness or financial literacy, okay. financial education. Okay, let me ask you, have you write them down that what are the additional sources of income you can create for yourself? Like if you're talking about investment, have you actually written them down that what are the investment opportunities you can open up for people so that you can uh, create a new way of new offerings for people? आपके existing clients से आप वो business निकाल सकते हो. Have you actually written them down? No, actually, I have not No. written. So see, that is the starting point. So if you are not writing them down, then you are just doing nothing actually. Yeah, because you said that you are thinking about it a year ago, so almost 10 months have gone by. And if you have not even written down that what are the new services that you are going to offer, you have not done anything. Actually, before joining this call, I'm talking with the 1% Club, that is Finance with Sharon, and he's offering CFO service. Like he will be managing complete portfolio of your family, Hmm. which includes investment, insurance, credit cards, and even investment in foreign, like US stocks, cryptos, etc. He will be rebalancing your portfolio and
Even if any loan requirement is there, he will help you to take loan at the lower rate of interest. Mhm. Because what I discovered for myself is that I'm like, if I started investment mindfully before 20 years back when I started earnings, the current portfolio will be totally different, as I'm focused on more on active earning and house management. So I totally ignored the investment part and even the insurance part also. So you think that these are two areas where people should pay their attention to? Yes, because Okay. I, being the financial person, being aware about this product, but not utilizing this product for myself, then many people are not, the people are not aware about these products. Okay. So have you done anything for your children? So you have a son and a daughter. Have you done anything for them? Yeah, yeah, I actually, mean, investment part I have started early uh, for them, but for insurance and credit card, I'm still lagging because बहुत बार मतलब कौन सा इंश्योरेंस है, दो तीन कंपनी से बात भी हुआ, लेकिन ये अभी द ओल्ड इंश्योरेंस कंपनी इज लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, और इवन आई हैव टर्म इंश्योरेंस फॉर माई सेल्फ, फॉर बट फॉर माई किड्स आई हैव नॉट टेकन एनी. hmm. So yeah, I'm lagging in that Yeah. still. So that's why things are not working for you, because something that you need to do for yourself first, it's not happening. आपने अपने जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग की आप बात करो, व्हाट द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू विल फेस, इवन आस्क योरसेल्फ दैट एम आई गुड एनफ टू एडवाइज एनीबॉडी ऑन एनी फाइनेंशियल. नाउ व्हाटएवर आई सजेस्ट, आई ऑलरेडी practice it. Yeah, I'm practicing that's what everything. I actually went for this CFO service. Hmm. He's charging like 50,000 plus GST for 1 year Hmm. Hmm. consultancy and providing all these services. So I think if Now you I'm doing, in that case you really need to figure out that age of 50,000 plus GST up there. If it is 18% GST, then it's a big money. yeah, Now 59. if it's close to 60,000 rupees. Now if you're paying this 60,000 rupees to him, वो आपके लिए जो पोर्टफोलियो बना के दे रहा है, उससे आपको 60,000 रुपीज का अर्निंग हो रहा है. Yeah, You have to have definitely. that I complete think, clarity. And let me come. See, yeah, I'm sure. talking about all financials today. So नंबर वन, अगर वो आपसे 60,000 रुपीज ले रहा है, आपको जो हो सकता है 60,000 का वो अगर आपके कंपनी पे बिल करेगा तो यू कैन सेव ऑन द जीएसटी पार्ट, है ना. जीएसटी 18% आपने टीसीएस में निकाल लिया, बाकी इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपने निकाल लिया, आईटीसी में आपने निकाल लिया, जो भी Yeah, that is 18% I'm आता है. going to obviously do. I'm हाँ, having तो GST वो number, so आपका पैसा बच गया. तो आउट yeah, ऑफ दैट 59,000, 9,000 यू आर गेटिंग बैक. yeah, क्लियर, यहाँ पे कोई क्लैरिटी, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है. नाउ कम 50,000 वाला पार्ट. ये जो 50,000 आप उसको दे रहे हो, वो आपके लिए जो भी पोर्टफोलियो बना के दे रहे हैं, इज इट गिविंग यू रिटर्न ऑफ 50,000 रुपीज पर ईयर? definitely. अगर वो कम से कम इतना देगा तो यू आर ओनली एट ब्रेक इन लेवल, आपके पास कुछ हुआ नहीं. यू डिडंट मेक एनी मनी आउट ऑफ इट. Definitely, because And coming to get that 50,000 rupees, what are kind of investment is going on? Like this 50,000 rupees that you are getting from the investment portfolio that he is suggesting, what is that percentage of the actual portfolio, that 50,000 rupees? If it is just 10%, that means आपने 5 लाख का investment किया, आपको 50,000 मिला. But if it is 1%, that means you are investing 50 lakhs. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी आप उनका पोर्टफोलियो सर्विस से आप ले रहे हो, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना है और उसमें गारंटीड रिटर्न कितना है. नाउ इफ द गारंटीड रिटर्न इज ओनली 10% और 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, या वॉट एवर बी द इन्वेस्टमेंट, इफ द गारंटीड रिटर्न इज ओनली 50,000, then it's a break even for, it's not a profitable venture for you. Are you getting me? Yeah, so when I interact with CFOs, when they come to me, मैं उसको यही सीधा सीधा बात बोलता हूँ कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे बताइए मैं 50,000 कमा सकता हूँ. अगर वो बोलता है आई कैन नॉट गारंटी, देन आई से यू आर ऑफ नो यूज फॉर मी. You are taking a guaranteed fees from me, which is 50,000 rupees or whatever your fees is. But if you are unable to guarantee me that return, then your services is of no use for me.
फिर तो मेरा 5 लाख का 5 लाख ही रह गया, उसका कम भी हो गया रादर। If I'm unable to recover that 50,000 whatever I'm paying you, then it's a loss for me, right? कम से कम 50,000 अगर मैं आपको दूंगा और मेरा अगर कम से कम 50,000 का प्रॉफिट आएगा तो वो ब्रेक इवन है, वो प्रॉफिट नहीं है। तो और व्हाई डू आई गिव यू 50,000 फॉर दैट? फिर तो मेरा 5 लाख का 5 लाख ही रह गया, वो तो मैं एफडी में भी डाल दूंगा तो भी उसमें से कुछ रिटर्न आएगा। साल का 3,500 4,000 तो आएगा, 3.5 लाख 4 लाख तो आएगा। उसके ऊपर मेरा जी निकल जाएगा टैक्स, 30% उसके ऊपर भी निकल जाएगा, 1/3 निकल जाएगा, लेकिन फिर भी आई कैन मेक 2 लाख। आपका मैं सजेशन नहीं भी लेके 5 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट करके मैं उसमें से 7% के हिसाब से, सॉरी 35,000 के आसपास मैं निकाल सकता हूँ। बट वाई शुड आई पे यू when you are not guaranteeing me at least whatever you are taking उसका double? Yeah, that I have worked out. Yeah, so you have to be very clear about it. Now Yes, exactly the same thing will happen when you want to go and give somebody this service. yes. अगर मैं भी ये सर्विस देने जाऊंगा तो मुझे भी उसको ये देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हाउ कैन माई सर्विस will become profitable for that person. See, you remember मैंने एक सेशन लिया था when we are talking about that in all kind of business, it's all a game of relationship. And what kind of relationship? It has to be strong relationship. It has to be trustworthy relationship. It has to be a reliable relationship. It has to be a long-term relationship, and it has to be a profitable relationship. ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप अगर आप बना रहे हो तो। I had this session probably in AFLD. Okay, your that like every relationship that matters to you, it has to have these 5 characteristics. The first one, it has to be a strong one. Second, it has to be reliable one. Third, it has to be trustworthy one. Fourth, it has to be long term one. अगर लॉन्ग टर्म नहीं है तो मैं क्या करूँ, बार बार थोड़ी नया नया रिलेशनशिप बनाता जाऊंगा, फिर रिलेशनशिप बनाते बनाते मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा। The last one is the most important one, which is profitable. Profitable in every possible way, not only just money wise. But when I'm talking about financials, it has to be money wise. It has to be profitable. तो अगर ये पांचों कैरेक्टर इसमें से कोई भी अगर मिसिंग है, it is not going to work. It is never going to work. It never worked. Whether it is personal relationships, whether it is relationship with your clients, whether it is relationships with your neighbors, whether it is relationships with people who matter to you, or whether it is relationship with yourself. Can you repeat the 5 characteristics of relationship? Strong, reliable, trustworthy, long term, profitable. See, in all my training programs, I want to deliver this. मैं चाहता हूं कि मैं जिसको भी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, जिसको भी मैं कोचिंग दे रहा हूं, उसके साथ कम से कम उनकी तरफ से ये रिलेशनशिप जरूर मैं उनके लिए बिल्ड कर सकता हूँ, so that they feel that they are actually having a strong, reliable, trustworthy, long-term, profitable relationship with me. If I fail to do that, this relationship is not going to stick. तो थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो उसमें ये पांचों पिलर होना जरूरी है, एक भी पिलर अगर कमजोर है तो उससे काम नहीं बनेगा। And when we are talking about financials, it has to be there in all possibilities. You actually need to take your notebook and write down. किसी के साथ भी अगर आप कोई long term relationship बनाने जा रहे हैं या relationship बनाने जा रहे हैं, as far as financials is concerned, it has to have these 5 parameters in place, 10 on 10. If any of the parameters is less than 10, you need to work on it so that it becomes 10. Even husband wife relationship, जहाँ पे ये it is, if wherever it is not 50 out of 50, things are not working somehow in those particular areas where things are numbers are less than 10. Okay, so this is one area where you must work on.
और यही सर्विस अगर आप देने भी जा रहे हो तो यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर ऑफरिंग दिस टू योर क्लाइंट, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं. Yeah, so you can apply this in your existing businesses also. क्लाइंट को ये महसूस होना पड़ चाहिए कि दैट पर्सन इज एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग a strong, reliable, trustworthy, long-term profitable relationship with you. अगर नहीं हो रहा है वो क्लाइंट कहीं और चला जाएगा, जहाँ पे इसमें से कोई भी पैरामीटर्स में उसको हायर वैल्यू मिलेगा वो वहीं पे चला जाएगा, आपको बताएगा भी नहीं कि क्यों जा रहा है. Many times they can't even tell why they can't trust you, why they can't rely on you, why they can't feel that strength in that relationship, why they can't consider it taking long term, or why they are unable to find it not profitable for them. आपको ये सारा पैरामीटर्स उनके सामने रखना पड़ेगा so that they know that yes, if I am building a relationship with Pravina Oswal, I am 100% confident कि मेरे साथ प्रवीणा का ये 5 जो पॉइंटर्स हैं वो मैच करे 10 on 10. इफ 10 on 10 नहीं, कहीं पे भी अगर थोड़ा सा कम है तो आई नीड टू फिगर आउट वो कम कहाँ पे है. इनफैक्ट आई एम वर्किंग ऑन creating a test kind of thing, creating an assessment kind of module. बहुत मेहनत करना पड़ रहा है. आई डोंट नो वेदर हाउ मच टाइम आई विल बी टेकिंग टू कम आउट विद दैट, जहाँ पे आई विल बी वर्किंग आउट ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स with the questions. Yeah, so coming up with all the relevant questions so that you can come up with a score sheet and eventually it works. Actually, the just electricity was disconnected, so I miss. It's okay. मैंने मिस होने नहीं दिया. I just stopped the recording. So the moment you joined again, I started. Yeah. So this is what I'm talking about, Pravina. Focus on this. Yeah. मैं इसके ऊपर एक सेशन लूंगा आगे जाके, which will probably continue a session of each of these words on a long on in detail. तभी जाके वो क्वेश्चनर भी मैं बनाऊंगा, वो असेसमेंट शीट भी मैं बनाऊंगा. Yes, I'm working a lot on this. I am actually looking at all the psychological impact of this, psychological, psychiatric, that how these parameters actually matter, where things might go wrong, where things are not working. So coming back, now you need to create that relationship with yourself as well. That is the starting point. That how much you are in relationship with yourself based on these parameters. That how much your relationship with yourself is strong. Strong मतलब कि अगर मैंने तय कर लिया सुबह 6:30 बजे सेशन में आऊंगी तो आऊंगी. Nobody can allow me or disallow me from being there. It's like that. That is, I'm talking about the strength in the relationship. If मैंने तय कर लिया ये करूंगी तो करूंगी, दुनिया इधर से उधर हो जाए. I will ensure that I'm not sick. I will ensure that I'm good enough. I will ensure that I have enough time. I will ensure that I have enough energy to ensure that this job is done. जिसमें मेरा ये role है. It has to be played. That is where talking about the strength of relationship with myself, followed by reliable. How reliable I am. अगर मैंने बोला, okay. So मैं आपको एक चीज दूंगा, इसको बोलते हैं मोडेम का यूपीएस. छोटा सा आता है. So if you connect it with your वाईफाई, फिर पावर चले भी जाए, your वाईफाई will be on. ओके, अमेजोन में मिल जाएगा आपको, उससे ज्यादा कॉस्ट नहीं होता है. 700-800 रुपए से शुरू करके 1200, 1500, 1600 तक कॉस्ट होता है यूपीएस फॉर मोडेम. Okay. ठीक है. तो और वो आपको मोडेम का बैकअप देगा 3 से 4 घंटा इन केस देयर इज अ लॉन्गर पावर कट. इसको बोलते हैं वाईफाई यूपीएस. छोटा सा आता है. Yeah, actually, I have inverter in the office, but
The light is there, but you network connectivity disconnect and then will connect again. हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो आप उसके लिए एक छोटा सा यूपीएस खरीद के लगा दो, तो ये इशू आपका Yes. कभी आएगा नहीं. इवन इफ योर इन्वर्टर फेल्स, Hmm. you will be you will stay connected with the world out there. आपका इंटरनेट कनेक्शन Okay. हमेशा एक्टिव रहेगा. So what I was talking about, yes, so relationship with self. So first हो गया strength. How strong is your relationship with yourself, followed by reliable. How reliable your relationship with yourself. आप अपने ऊपर कितना रिलाई करती हो. अगर आपने खुद को कुछ करने के लिए जवान दे दिया, प्रॉमिस कर दिया, what is the possibility you will keep that promise? Or out of 10 cases, in how many cases you keep those promises? You really actually need to do the auditing for it. आज मैंने ये promise किया खुद को, और उनमें से मैंने ये promise पे मैंने काम किया. I actually kept myself my promise in these areas and it worked for me. This is about reliability. Then it comes about trustworthy. How much I am trustworthy to myself. Can I trust me? If I promise something, if I say something I will do, can I trust me on this? This comes the trustworthy part. Then comes long term. Many people, they don't have a long term relationship with themselves. लोगों के साथ अपना relationship जो है ना बहुत छोटा होता है, short term relationship होता है खुद के साथ. Throughout the day they are doing everything for somebody else and nothing for themselves. So if in a 24-hour period, if you are say working only 1 hour for yourself committedly, कि मैं अपने आप को 1 घंटा दे रही हूँ, and in this 1 hour I will not allow any distraction to distract me, then that is the relationship that you are experiencing with yourself. ये जितना लंबा होगा उतना बढ़िया है. So you have to observe that whether it's a long term relationship or a short term relationship with yourself, है ना. और लास्ट में आता है प्रॉफिटेबल. Is my relationship with myself is profitable? So you can create your own parameters of profitability. It can be in terms of time, it can be in terms of attention, it can be in terms of money, it can be in terms of health. And you can take the best way to consider this is take your wheel of life. Take out Wheel of all those areas, all those 8 areas, और वो सारा 8 areas में ये 5 पैरामीटर कैसे फिट होता है उसको देखो. You will discover the new you. You will discover the existing you, then you can create a new you out of yourself. अपने एडवांस कह रहा हूँ, मास्टर प्रैक्टिशनर कोर्स में किया ना, it starts with wheel of life. Yes. And the wheel of life that I am talking about is far deeper and far broader than whatever you covered in master practitioner course. उसमें एक्चुअली आपने कुछ किया ही नहीं. So that is what we will be covering आगे जाके. But the foundation is what I am sharing with. This is the foundation. So relationship with self, relationship with people who matter to you, followed by relationship with your clients, followed by relationship with everybody else. और जहां जहां पे आपके लिए ये रिलेशनशिप जरूरी है, वहां पे ये पांचों पैरामीटर्स शुड बी एट द हाईएस्ट लेवल. और फाइनेंस में तो डेफिनेटली, फाइनेंस में प्रॉफिटेबिलिटी इज प्योरली नंबर गेम. Okay, so with this new awareness, what do you see possible for yourself now, Pravina? Yeah. Uh, Regarding relationship with self, yeah, I'm good. Yeah, definitely I have to work with my clients on the relationship because whatever they ask, I only provide that services. It is like, but I think being when I will be proactive and think what is beneficial for them and offer that services, definitely my income will also increase and the relationship will also improve.
So as far as finances is concerned, I can give you a wonderful idea. Start with insurance and only focus on two insurance products. One is term insurance, and the second one is health insurance. Start with health insurance Yes. first, followed by term insurance. बस सिर्फ इन दोनों के ऊपर फोकस कीजिए और किसी भी को फोकस करने की जरूरत नहीं. This market is still only 5% covered in India, probably less than 5%. So the current government is doing its level best. उससे जितने जिसके लोग जितने का आज की डेट में बैंक का खाता है, they have arranged some kind of health insurance and term insurance for them. छोटा छोटा है term insurance, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, 2 लाख का 5 लाख का term insurance है. प्रधानमंत्री पीएमए जो PMY वाला जो योजना है, तो उसमें क्या कवर 2 लाख और 5 लाख का कवर है. बट आयुष कवर्स अ बिग, आयुष कवर्स गिव्स यू कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली मेंबर. वो भी ऑटोमेटिक है, जिनको पता है उनको पता है, जिनको पता नहीं, आपके आधार कार्ड के साथ, आपके आधार नंबर के साथ 5 लाख का आयुष का हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड है. एंड इफ यू गेट ट्रीटेड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पे जितने भी आपके एडिशनल खर्चे आते हैं वो सारा इसी में कवर्ड है. और प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे आयुष बेड्स हैं, वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो. So normally I believe 5% of beds in any private hospital is Ayush connected. जैसे CGHS का होता है वैसे आयुष का भी है. तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो हर आधार कार्ड पे आपका 5 लाख तक का आपके पास इंश्योरेंस कवर्ड है, एंड यू कैन यूज दैट 5 लाख इंश्योरेंस पर ईयर इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल ऑल्सो, जहाँ पे गवर्नमेंट ट्रीटमेंट होता है. तो वो आयुष ट्रीटमेंट होगा तो वहाँ पे वैसे ही खर्चा कम है, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल को वैसे ही सब्सिडी मिलता है. ऑन टॉप ऑफ दैट आपके जो भी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो 5 लाख में कवर होता है. ये बहुतों को पता नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था आयुष्कर. है ना. तो ये आयुष का कवरेज है, ये आपको यू कैन, इट हैज टू बी इनेबल्ड. सम केसेस आई थिंक आज की डेट में शायद ऑटो इनेबल्ड है, अदरवाइज यू हैव टू इनेबल इट. एंड इट रियली डजंट मैटर कि आपके पास कोई और इंश्योरेंस है या नहीं. But hospitals don't give any idea, and facilities they are providing with this type of insurance, they are not so good. वो अलग बात है, बट द पॉइंट इज इट इज देयर. द Yeah, पॉइंट I इज इट have इज to देयर. check it out. द पॉइंट इज इट इज देयर. And many rights, if you don't demand, you won't get. हाँ, बट दीज आर ऑल इन लाइक नेटवर्क हॉस्पिटल्स. तो उसमें भी नेटवर्क हॉस्पिटल्स है आज की डेट, आयुष के अंदर भी नेटवर्क हॉस्पिटल्स है. इफ यू गो इनटू दोस नेटवर्क There are हॉस्पिटल्स, आपको देने की so जरूरत नहीं. many schemes, like government also provides so many schemes for the businessman. तो क्या क्या करे? हाँ, that I'm talking about. As long as insurance is concerned, these are the two insurance you can work on. Term insurance and health insurance. लोगों को educate करना पड़ेगा. So I work with 5 insurance agents. तो उनको तो पहली बात तो है कि उनको मैंने इंश्योरेंस एजेंट से मैंने उनको चेंज करवा दिया. आई कन्वर्टेड देम इनटू इंश्योरेंस एडवाइजर फॉलोड बाय इंश्योरेंस एडुकेटर्स. तो मैं भी उनको बोलता हूँ कि आप अपने आप को प्रमोट करो एज एन इंश्योरेंस एडुकेटर, नॉट एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर और इंश्योरेंस एजेंट. टेक्निकली लीगली आप इंश्योरेंस एजेंट हो, आपने जब IRDA से लाइसेंस लिया, टेक्निकली आप एजेंट हो, बट डू नॉट प्रमोट योरसेल्फ एज एन इंश्योरेंस एजेंट और एन इंश्योरेंस एडवाइजर. लोग इन दोनों से डरते हैं, they avoid them. You replace that with insurance educator. आप लोगों को इंश्योरेंस का ज्ञान दो, उनको समझाओ बैठ के. Now people trust educators, people trust teachers, people trust coaches. So these 5 people, they promote themselves as insurance educators. उनके विजिटिंग कार्ड भी उन्होंने चेंज कर लिया, उसमें लिखा इंश्योरेंस एडुकेटर. तो इंश्योरेंस एडुकेटर आप बन जाओ, आपके पास क्लाइंट की कमी नहीं होगी. उसके बाद खाली उनको बोलना कि अगर आप चाहो तो मेरे से भी इंश्योरेंस ले सकते हो, अगर आप चाहो तो किसी और से भी ले सकते हो. और द बेस्ट वे टू सेल इंश्योरेंस नाउअडेज इज टू कनेक्ट योरसेल्फ विद इंश्योरेंस, उनको क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स, लाइक पॉलिसी होल्डर हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, या इस टाइप के एक और है. यू कनेक्ट विद देम, यू बिकम देयर एजेंट, बिकम एन एडवाइजर विद देम. इन दैट केस यू कैन सेल एनी इंश्योरेंस. किसी का भी आप इंश्योरेंस बेच सकते हो. अदरवाइज इंडिविजुअल अगर आप करेंगे तो यू कैन ओनली सेल इंश्योरेंस ऑफ वन कंपनी. So you take that IRDA number, उसका टेस्ट फेस जो भी देना है वो दे दो,
You take that IRDA number, then you connect yourself with companies like policybazar.com. ऐसा ऐसा एक और है, I forgot its name. तो आप उनके साथ एडवाइजर बन जाओ. तो दे विल गिव यू एन ऑनलाइन अकाउंट. उस ऑनलाइन अकाउंट में आप लोगों को इंश्योरेंस बेच सकते हैं, और इंश्योरेंस में अच्छा खासा पैसा है. हेल्थ इंश्योरेंस में यू गेट ऑलमोस्ट एज गुड एज 35% ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर. 20% तो किसी में भी है, 35% तो मैं आपको कह रहा हूँ कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे है. सो यू बिकम एन इंश्योरेंस एडुकेटर, लोगों को एडुकेट कीजिए एंड देन यू इनवाइट देम. बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी. आपको और कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. एंड देन यू कैन इवेंचुअली मूव टुवर्ड्स ए म्यूचुअल फंड्स फॉर एग्जांपल. आप उसको बोलो कि आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो भी मैं आपको म्यूचुअल फंड से रिकवर करवा के दे दूंगी. सो यू आप फिर एमपी का रजिस्ट्रेशन ले लो, AMFI एमपी का रजिस्ट्रेशन ले लो. लेके आप म्यूचुअल फंड का एडवाइजर बन सकते हो. वहां पे भी यू प्रमोट योरसेल्फ एज अ म्यूचुअल फंड एडुकेटर और इन्वेस्टमेंट एडुकेटर. म्यूचुअल फंड्स आर ये रिस्क. पूरे लाइसेंस मुझे मेरे हस्बैंड के नाम पे लेने पड़ेंगे, बीइंग चार्टर्ड किसी के भी नाम पे आप ले लो. प्रैक्टिस. मतलब आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल. किसी के भी नाम पे आप ले लो. लाइसेंस अगर आपके पास रहेगा तो यू कैन नॉट ओनली एडुकेट, यू कैन ऑल्सो हेल्प देम टू इन्वेस्ट. आप फिर इन्वेस्टर एजुकेशन, आप चाहो एजुकेशन फ्री में दे सकते हो, एजुकेशन के लिए आप चार्ज कर सकते हो. जैसे ये आपसे 50,000 चार्ज कर रहा है, मैं तो कहता हूँ 3 एरिया ही काफी है. तीनों एरिया में अगर आपने लोगों को एम्पावर कर दिया, योर जॉब इज डन. उनको एक मेडिकल इंश्योरेंस दो अच्छा खासा, एक टर्म इंश्योरेंस दो, और उनको सिखाओ कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें रिस्क कम होता है, और उसमें इन्वेस्ट करके आप वो प्रीमियम रिकवर कर सकते हो, फिर उससे ज्यादा भी रिकवर कर सकते हो. You have to become an educator. Don't try to become a seller or try to become an agent or try to become an advisor. एडुकेटर बन जाओ. जैसे मैं आपको एडुकेट कर रहा हूँ, मुझे ये सब सिर्फ सब चीजें पता है. Like it's only a matter of taking a license. Back I know about all these things. Even I can suggest you mutual funds. I can suggest you कौन से stocks में invest करने से आपका safe investment रहेगा. There are many stocks जहाँ पे आप safe investment कर सकते हो for long term. आपका पैसा डूबेगा नहीं, धीरे धीरे ग्रो होगा, लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं. ऐसे भी स्टॉक्स हैं. Okay, so this money magnet mastermind is a huge program. That's why I kept it as a subscription based program. Okay, it is not something that I can deliver in just half an hour or 1 hour or 5 sessions. ऐसा नहीं, it's a long term program. जहाँ पे धीरे 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 आपका फाइनेंस स्टेबल होता जाएगा, उससे रिटर्न्स भी स्टेबल होते जाएंगे. फिर मतलब फिर वहां से your lifestyle will also become stable at certain level, and everything will be automated. All right, okay, so that's it for tonight. I'll share the recordings. मुझे पहला सेशन का भी रिकॉर्डिंग शेयर करना है. ये भी बहुत पावरफुल सेशन है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. दिस वाज नॉट प्लान फॉर टुडे, इट वाज प्लान फॉर वन ऑफ द फ्यूचर सेशंस. बट अच्छा हुआ, कम से कम उसका फाउंडेशन बन गया. इवन आई आल्सो नो दैट व्हाट आई शेयर, दिस विल हेल्प मी टू लाइक so reinforce the trainings, reinforce the learnings in this part of the program in the future. Yeah. What is covered in Sunday session? Actually, I'm not able to attend it and even not able मैं to see शेयर the कर दूंगा. recording. I'll share the recordings. We covered 2 more issues associated with uh, the mindsets that we are covering. जो है ना कि financials diseases kind of thing, जो ailments है जो हम लोगों को बताते नहीं, since we do not share it with others, वो अंदर ही अंदर हमें खाता जाता है. So we talked about those things.
ऐसे बहुत सारी चीजें हैं यार, मतलब जगह बनाएंगे तब जाके नया चीज भर पाएंगे। तो यहाँ पे इतनी गंदगी भरा हुआ है, इसकी इसकी क्लींजिंग चल रही है। These are all very powerful sessions, छोटे 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 से सेशंस हैं, and these are all designed to create a life that you love to live, है ना? Okay, Pravina, Yes, good, thank you. and thanks for joining the session. अगर आप नहीं होते तो मैं सेशन लेता भी नहीं। चलो, okay, bye bye. Yeah, bye. फोटो ले Thank you. लेते हैं, just let's Yes. take a photo. Yeah. So here we go. 1 2, थोड़ा अपने आँख सर का पोजिशनिंग करो, so that there is no reflection on your, this is perfect, perfect. So here we go, 1 2, wonderful. So So, yeah, how the book is doing? Your wife book, the Japanese techniques, अभी उसका हम इंडियन पेपर बैक वर्जन निकाल रहे हैं, वी आर ऑलमोस्ट एट द फाइनल स्टेज, सो वी आर कमिंग अप विद द इंडियन पेपर बैक वर्जन। and what is the feedback of Kindle version? You have launched it फीडबैक in. अच्छा खासा है, मतलब वी हैव पुट सम ऑफ द फीडबैक इन द पेपर बैक वर्जन ऑफ द इंडियन वर्जन आल्सो। अभी हुआ ना, लाइक वी गॉट पीपल हु परचेज इट इन जर्मनी, यूके, देन कनाडा, पीपल हैव परचेज इन दोस कंट्रीज एज वेल, तो वहां से हमें मिल रहा है। अब इसको आगे जाके पब्लिसिटी भी करना है, सो अभी तो बस वी आर, आई एम गेटिंग इनटू द, उसको क्या बोले कि गेटिंग टू द वाइब्रेशन दैट व्हाट इज दिस पब्लिशिंग इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट एंड हाउ टू गो अबाउट इट, उसको कैसे आगे जाके और इसको एक्चुअली प्रमोट कर सकते हैं, लेट द वर्ल्ड नो दैट वी आर देयर। एक मैंने वीडियो शेयर किया था अभी 2 दिन पहले, वेयर जहाँ पे देयर वाज अ कोट बाय टेड टर्नर। तो टेड टर्नर के फेमस कोट है, दैट कोट सेज दैट अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, वर्क लाइक हेल एंड एडवर्टाइज। ये टेड टर्नर का बहुत एक फेमस कोट है। So this one quote which I liked, I got to know about this quote long back, मतलब मेरे को 5-7 साल होगा। So this is a very powerful quote, and I posted it in the group, अपना जो मैजिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप को मैंने पोस्ट किया है। So there was a small shot from Arnold Schwarzenegger where he talked about this quote and immediately drew my attention, तो मैंने तुरंत ढूंढा उस कोट को गूगल में और उसको उठा के लगा दे। वो शॉट भी डाला है अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का और वो कोड भी डाला है, एंड Actually, I दिस have yet इज to अ watch वेरी, that. उसको देखो देखो, मैं जितने चीज शेयर करता हूँ मेरे अपने ग्रुप में एक भी मिस मत करना, बिकॉज दीज आर ऑल वेल रिसर्च वीडियोस। मैं खुद देखता हूँ 2 बार 3 बार 4 बार, तब जाके मैं किसी को ग्रुप में शेयर करता हूँ, अदरवाइज आई डोंट शेयर these videos. So these are exceptionally classified videos. Okay, so that's it. So early to bed and early to rise, work like hell and advertise. है ना? तो हर अपॉर्चुनिटी में आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। सो इफ यू नोटिस दैट एवरी अपॉर्चुनिटी आई यूज टू एडवर्टाइज माई सेल्फ, है ना? मैं ऐसे कुछ बातें बताता हूँ, ऐसे कुछ कोट्स यूज करता हूँ, खुद का बनाया हुआ कोट्स, सो दैट यू रिमेम्बर कि हाँ ये मैंने पिनाकी से सुना था, ये मैंने पिनाकी से जाना था, है ना? कल कोई और इसके बारे में बोलेगा तो यू कैन कनेक्ट, डेफिनेटली इसने कहीं ना कहीं से पिनाकी या तो वीडियो देखा होगा या उसका कोई कोर्स किया होगा। Yeah, So like, this quote I have not heard, so definitely I remember Pinaki for this quote. या ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। सो यू ऑल्सो बिकम दैट पर्सन, जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले यू एडवर्टाइज। बहुत सारी चीजें हैं, कल कल आप आईआरडीए का लाइसेंस लेंगे आपको मेरी याद आएगी, कल आप एमफी का लाइसेंस लेंगे आपको मेरी याद आएगी, आप किसी को सजेस्ट करेंगे आपको मेरी याद आएगी, आप पॉलिसी बाजार में अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको मेरी बात याद आएगी, पिनाकी ने बोला था, पिनाकी ने बोला था। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बी दैट पर्सन, दिस इज part of that relationship, that strong, trustworthy, reliable, long-term, profitable relationship. This Actually, is I have to prepare SOPs for my office so that I can delegate the work and get some time for myself for jaldi doing karo. all these things. Don't wait for life to happen. Take life as it comes to you.
Yeah, the how you can make the future sure by making it. Yeah. Okay. Thank you. Okay, Praveen. Bye bye. Have